أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So today we will continue our dars what we were studying yesterday, and we'll continue plurals. Okay. Yesterday what we did was we understood that plural, there are two types of plurals, and a masculine noun, a masculine singular noun will have a plural, and in the same way feminine noun, a singular feminine noun will have its own plural. It is possible that both the masculine noun, singular noun, as well as the feminine singular noun can have same plural, but it's also possible that both have a different plural. So both possibilities are there. And then the plural that we're making, there are two types of plurals. One is a sound plural, one is a broken plural. Sound plural is the one in which we have una in case of masculine and ati in case of feminine. And a broken plural, some nouns will have masculine sound plurals and some have broken plurals. And broken plurals are jama mukassir, what we call as broken. Jama salim is sound. So broken plural, there is no pattern for them. So we'll have to memorize them. Regarding the zamair, which we had studied earlier on, but we only studied the singular ones earlier on. Uh, these are the singular. Hua is a singular zamir. It's a detached pronoun. That means he for a singular and here for a she, singular she, third person. We have studied that. And for the plural, we have whom, that is they, but for masculine. And hunna, they again, because in English, you have the same word for the plural, third person. But in Arabic, we have two words. We have whom and hunna. So hunna is for feminine, they. So if I had to use the they for plural, I'll use hunna. Huma is same, I mean, that we will study when we do the dual. So this will be for, and you had to memorize it this way. Hua, huma, hum in the same pattern, and it should be at the tip of your tongue. Because zamair, whether they are the attached pronouns or they are the detached pronouns, they are the most frequently used in Quran. Most frequently you will find it. And even in the conversation, we use zamair. So this has to be at the tip of your tongue. Hua, huma, hum in the same pattern that I'm reading. Hua, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. So that will be the detached pronoun. The same for the attached pronoun. The difference here is, when if I write the detached pronoun, sorry, attached pronouns will be who, huma, whom, ha, huma, hunna, right? This will mean like he and they, she and they, and this will mean possession, right? This will be his, this will be her, this will be their, and this will be there, right? And these are attached. So you can see that the plural, whom, and in the attached pronoun, and the plural here is same. So say hum talibun, right? They are, sorry, hum tullab, talibun is no word. Hum tullab, they are the students. They are students. Or if I say their pens, or their pens, aqlamuhum. So let me write it here, okay? So if I use the plural, so say hum tullab, right? So this means they are students. This will be plural, right? But if I say their, the possession, that will be this will be used in murakkabe izafi, right? Construction. So this will be aqla muhum, their pens. So say his, if the pen is one and people are many, so say qalamuhum, their pen, right? So accordingly, you can use it in the sentence. So it depends on what you're trying to say. But what I want to say is that this is murakkabe izafi, and this is a simple sentence, jumla ismiya. It starts with an ism, and the ism here is a pronoun. Same goes on with
the plural of feminine. So say hunna, hunna talibat. Now you can see that here the plural, यहाँ पे आप ये चीज देखो कि प्लूरल जो मुजक्कर तौलिब, तौलिब इज सिंगुलर, उसका प्लूरल जो है वो ब्रोकन प्लूरल है, इसका प्लूरल साउंड प्लूरल नहीं है, ठीक है। और जो मोनस इसका है तौलिबथुन, उसका प्लूरल साउंड प्लूरल है, बिकॉज तो आत आ गया ना, दैट्स द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू मेमोराइज देम। और जैसे जैसे हम वर्ड्स आगे आगे वी स्टडी, तो इट विल बी क्लियर, जितनी आप एक्सरसाइजेस करोगे सो आपको ये समझ आएगा किसका क्या है। बट जहां पे डिफरेंस हो वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखो, इट्स तो लब, इट्स नॉट तौलिबून। कैन मेक ए मिस्टेक हियर बिकॉज यू थिंक दैट फेमिनाइन का अगर साउंड प्लूरल है तो इसका भी होगा, नहीं, इसका ब्रोकन है, इसका साउंड है। सो मैं नाम आपको बता देता हूँ, साउंड प्लूरल we also called as jama salim, right? So it comes with una and at, atun, right? दूसरा है broken plural, so say jama mukassir, right? So it will be, there's no examples, it can be anything, right, which we will understand. So this is what you need to remember. Or if I say aqlamuhunna, right, ya qalamuhunna, ठीक है, मुरक्कब इजाफी. So plural, sorry, zamair should be at the tip of your tongue, whether it's an attached or it's a detached. Ya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. And here hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, right? Ya and na. So it should be, there should be a separate page on your notebook जहाँ पे दोनों मेंशन है और पूरे लिस्ट के साथ, पूरी डिटेल्स के साथ, और वैसे इसको इसी पैटर्न में याद करना है. पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे पैटर्न क्यों? बिकॉज जब हम वर्ब करेंगे, द रीजन व्हाई वी टुक प्लूरल फर्स्ट, जब हम वर्ब करेंगे हमारे लिए आसानी होगी, अदरवाइज वर्ब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इसी पैटर्न में आप करो. पैटर्न कैसे स्टार्ट होगा कि सबसे पहले थर्ड पर्सन स्टार्ट होगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. थर्ड पर्सन के 3 सिंगुलर डुअल प्लूरल, सेकंड पर्सन के 3 सिंगुलर डुअल प्लूरल, और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर डुअल प्लूरल एक ही है, ठीक है। और पहले इसमें फिर पैटर्न में मैस्कुलिन फेमिनाइन, इसके में मैस्कुलिन फेमिनाइन, इसके में तो एक ही है, मैस्कुलिन फेमिनाइन सब एक ही है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये समझ आ गया? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस मींस, दिस इज सेम. पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन आ गया, उसके बाद थर्ड पर्सन डुअल मैस्कुलाइन आ गया, उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल मैस्कुलाइन, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन थर्ड पर्सन ही चल रहा है यहाँ पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन, थर्ड पर्सन डुअल फेमिनाइन, थर्ड पर्सन प्लूरल फेमिनाइन, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पे हम आएंगे, फिर सेकंड पर्सन आएगा अंता अंतुमा, तो उसी वही पैटर्न. तो ये आपको ये चीज याद रखनी, ये पैटर्न फॉलो करना है, इसी हिसाब से आपको ये जमायर नोटबुक पे लिखने हैं, वेदर दिस इज अटैच्ड और डिटैच्ड. 2 चार्ट्स इसके बनेंगे आपके, इसका एक चार्ट बनेगा, इसका दूसरा चार्ट बनेगा, और यही सीक्वेंस में और ऐसे याद करना है. बिकॉज जब हम वर्ब करेंगे एग्जैक्टली यही पैटर्न वहां पर भी मिरर होगा, एग्जैक्टली फॉलो होगा वहां पे. It's good, this goes in parallel. You start with the third person and then second person and first person, and third person में पहले सिंगुलर, फिर डुअल, फिर प्लूरल, और सेकंड, फिर उसके बाद मैस्कुलिन फेमिनाइन, और उसी का इसके बाद सेकंड पर्सन, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन. ये चार्ट आप बना के रखो और इसको ऐसे याद करो, ठीक है. ये एक चीज हो गई. Anyone has any questions on it? All right. So we will be going to the book, but before that, there are some words that I want to discuss with you. For example, there is the word zauj. It's a verb. It means spouse or partner. It can be used for masculine as well as feminine, because partner, right?
हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए यूज हो सकता है ये, दोनों, whether it's a husband or a wife. But अगर specific wife का mention करना हो, then we can use the word zawjatun. ठीक है? This is if I have to specifically mention a wife. I can use this for wife as well as husband, zawjun. Either one, partner, right? Partner. But इसका plural जब हम बनाए, जब हम इसका plural बनाएंगे, तो ये बनेगा zawjat, zawjatun. ठीक है? इसका sound plural आएगा. इसका plural azwaj. ठीक है? So this means कि azwaj can be used for both, plural, masculine as well as feminine, husbands or wives. But if I have to specifically mention the wives, I can use zawjat. Sound plural और ये broken है. इसके masculine का plural जो है वो broken है और इसके feminine का sound plural है. So it is possible, just like we have in Talib, we have masculine का broken plural आ गया, मुकसर, और उनका feminine का वहां पे plural जो आ गया वो sound plural आ गया. So that's possible. These are the possibilities. So to memorize them. So that should be it. And I hope that you have done your exercises yesterday. So if you have done that, then we'll proceed. If there is any confusion or anything in that, you can ask me. If there was anything that you don't understand or you need any clarification, you can ask me about it before we go to the book. I can show it on the board. But if we're all good, then we're all good.